you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 12 of your class 8 English grammar, that is prepositions. Prepositions क्या होती है? Preposition is a word placed before a noun or pronoun. Noun और pronoun से पहले place होता है क्या show करने के लिए? Relation with some other words in a sentence. Show करते हैं relation कुछ other words से sentence में. Like preposition always have an object. Preposition करके हमेशा क्या होता है? एक object होता है. The children ran across the field. Children ने कैसे रहेंगे? Across the field. By changing preposition, we can completely change the relation between two. जब हम preposition change करते हैं, हम completely change कर देते हैं relation किसमें? Two things में. Like and thus. Change the meaning of the sentence. और हम क्या change कर देते हैं? Meaning से change कर देते हैं sentence का. Like the cat stood on the table. On मतलब ऊपर. The cat stood beside the table मतलब पीछे. The side में like the cat stood behind मतलब behind पीछे. The cat stood in front of मतलब बिल्कुल आगे in front of the table. The cat stood before the table मतलब टेबल से पहले. So kinds of prepositions क्या होती है? Like prepositions of time. At, on, in. So at कहाँ use होता है? Denote. It usually denotes a definite point of time. Usually क्या denote करता है? Definite point of time denote करता है, but can also be used for indefinite periods. और हम indefinite periods के लिए भी use कर सकते हैं. Like at 8 o'clock, at midnight, at the beginning of the class, at the end of the meeting, at dawn, at night, at Christmas, at Diwali. एक definite points of time के लिए भी use करते हैं और indefinite period of time के लिए भी use करते हैं. Now on क्या होता है? It is used with days and dates. Dates और dates के लिए use होता है. Like on Monday, on 6 December, on Diwali day, on Christmas Eve, on the evening of 6th March. और इनका यूज होता है. It is used with parts of days, months, years, season में किसके साथ? Parts of days के साथ, months के साथ, years के साथ और seasons के साथ यूज होता है. Examples: in the morning, in the afternoon, in the evening, in summer, in winter, in May, in 2024. In is also used with the future tense. ये उसके साथ किसके साथ यूज होता है? Also ये हमारा future tense के साथ भी यूज होता है. क्या शो करने के लिए? Period, show to show the period in which an action happened. कि किस पीरियड में एक एक्शन हुआ है. So examples: in 2 hours, in a few minutes, in a fortnight. So carefully note the difference between in and within. हमें difference हमेशा in और within के अंदर हमेशा नोट करना है. Like in कहाँ यूज होता है? At the end of. और within before the end of. In the end of में in यूज होता है. Before the end of में आपका within यूज होता है. Now example: I shall be back in a week when it is over. मतलब in a week जब वो खत्म हो जाएगा उसके अंदर. I shall be back within a week मतलब week के अंदर, before a week is over. So used by, during, until and while. By, during, until और while कहाँ यूज होती है? Prepositions आपकी used by to indicate that an action is completed not later than a fixed time. कि एक action complete हो गया मतलब एक fixed time से later नहीं. Like he said that he had to complete the report by Friday मतलब Friday तक. We use during to say that an action takes place for a fixed duration. कि एक fixed duration में एक action होगा. Like I fell asleep during the journey मतलब journey के चलते हुए. We use until and till to indicate how long a situation continues. Until कहाँ क्या इंडिकेट करेगी? एक मतलब किस सिचुएशन किस तक एक सिचुएशन कंटिन्यू करती है. I cannot enter into this deal with you until my father give me permission. मतलब into this deal with you until जब तक मेरे father permission नहीं देंगे. We use while to introduce an adverbial clause. एक adverbial clause को introduce करने के लिए हम while use करते हैं. Like she slipped and fell badly while she was climbing over the wall. Now prepositions of position. Like in, at, on, in, near, behind, beside, above, beyond, over, below, between, among. ये क्या आपकी prepositions of positions है. Like at the window की window पर. On the table मतलब टेबल के ऊपर. In the bag मतलब बैग के अंदर. Near मतलब पास में. Near the wall. Behind the curtain मतलब curtain के पीछे. Beside the table मतलब टेबल के साइड में. On the left of chair. Left chair मतलब on the left of chair. chair के ऊपर left में.
एट द बैक ऑफ चेयर, चेयर के पीछे, इन द मिडल ऑफ चेयर, चेयर के बीच में, एट द फ्रंट मतलब आगे एकदम, ऑन द राइट लिख दो एकदम राइट में, अबव द हिल्स, हिल्स के ऊपर, बियॉन्ड द रिवर मतलब रिवर के बियॉन्ड पीछे, सो ओवर द मैन मतलब मैन के ऊपर, अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे, बिलो द पेंटिंग, पेंटिंग से नीचे क्या है, विंडो है, बिटवीन द बॉयज, बॉयज के बीच में क्या है, चेयर है, बॉयज के बीच में चेयर है, बिटवीन आ गया ना, अमंग द बर्ड्स मतलब बर्ड्स के अमंग जब होते हैं जब एक दो से ज्यादा होते हैं। नाउ बिलो और अंडर, बिलो एंड अंडर मींस लोअर देन, मतलब बिलो और अंडर का मतलब होता है कि नीचे, सो बट समटाइम्स वी कैन यूज ईदर ऑफ देम, हम कभी कभी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट अंडर ऑल्सो मीन्स वर्टिकली बिलो, इसका मतलब होता है जस्ट बिलो, वर्टिकली बिलो। अंडर ऑल्सो हैज द आइडिया ऑफ कॉन्टेक्ट, इसमें आइडिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी होता है। She put the book under her pillow, मतलब पिलो के जस्ट नीचे, वो तो टच भी हो रहा होगा। There was a beautiful lake below us in the valley, हमसे नीचे, below us, वर्टिकली तो नहीं है बट हमसे नीचे है। So the traveler was resting under a tree, tree के just under, मतलब वो टच भी नहीं हो रहा स्पेस। So below is also used in measurement to suggest the idea of being lower than, ये measurement में भी यूज होता है सजेस्ट करने के लिए आइडिया कि वो नीचे है। If the temperature was 3 degrees below normal, 3 degrees था normal से below, above और over, both above and over means higher than, इसका मतलब होता है कि higher than। Sometimes we can use either of them, कभी कभी इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, like a flag waved over our head, हमारे heads के ऊपर, a flag waved above our heads, हमारे heads के above। So but over can also means covering, इसका मतलब होता है covering or vertically above, like my father put a blanket over भी कवर कर दिया, there is a bridge over the stream, vertically ऊपर है। Now prepositions of movement and direction, into, to and towards, like go into the tunnel, tunnel के अंदर, to the school मतलब school तक, to the school, towards the school मतलब school की तरफ, out of मतलब tunnel से बाहर, come out of the tunnel, from pick from the table मतलब टेबल पे से, move through the forest, through मतलब forest में से, round run round the tree, round मतलब गोल गोल, climb down the tree मतलब down मतलब sorry climb down the hill, down the hill मतलब hill पे से, climb up the hill के ऊपर, fly over the hills, hills के ऊपर, walk along the bank, bank के साथ साथ, row across the rivers, across मतलब rivers को across। Now to has the sense of destination towards of direction, to का क्या sense होता है, destination मतलब किसकी तरफ, direction की तरफ, like we went to the school, reach the school मतलब school तक, we went towards the school, in the direction of the school मतलब school की तरफ, into the north, went towards interior of something मतलब interior में like अंदर, the dog jumped into the pool, she quietly walked into the room, अंदर एकदम। It has the idea of hitting, इसका मतलब आइडिया क्या होता है, hitting का, she threw the stone at the dog, जो hit कर रहा है। Example for suggest the beginning of a movement, for के suggest करता है कि beginning हो रही है एक movement की, like the worker left for the factory, इसके लिए for the factory, the child leaves for school early in the morning। अगेन शो प्रेशर और कॉन्टेक्ट, ये क्या शो करता है, प्रेशर और कॉन्टेक्ट शो करता है। ही थ्रू द बैग अगेंस्ट द वॉल, फ्रॉम इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, लाइक शी हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस। ऑफ शो सेपरेशन, ऑफ क्या शो करता है आपको, सेपरेशन शो करता है। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ or from the surface of or down from, like he fell off the horse, the ball rolled off the table, out of मतलब बाहर, the bird flew out of the cage, cage में से बाहर। So other prepositions showing movements are through, over, along, across, round, up, down. These prepositions have already been illustrated, like we travel by car, by bus, by train, by air, by boat, by sea. We walk on foot, we ride on horseback, we go on bicycle. Here are the words followed by appropriate prepositions, like my younger sister has been admitted to class 1. The manager did not agree to my proposal.
Everybody will agree with me at the we should not waste time. With me that we should not waste time. All of us agree on this point. So 2 hours a week have been allotted to yoga. I am amazed at the courage shown by his little child. Amazed means surprised. So he was angry with me for not writing to him earlier. He was angry at being kept waiting. She was annoyed with her son for behaving so stupidly. She was annoyed at her son's stupid behavior. We are annoyed with somebody, we are annoyed at something. So, the child is quite safe. You need not feel anxious or about him. Anxious मतलब anxious for him या फिर about him मतलब उसके लिए. So Priya apologized to her teacher for not submitting the assignment on time. These are the some sentences you have to read by your own. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.